acyclic diene and cyclic diene that can be of two types, homoannular and heteroannular. The basic values are 217, 253 and 214 respectively. Some increments I have told you: alkyl substituent, ring residue, exocyclic double bond, all are +5, where अगर आपके पास एक additional double bond है in conjugation or extending conjugation, that is +30. Some oxochromes I have told you, but oxochromes you may not remember. If at all some oxochrome will be there in the question, the value will be given in the question. But basic value and increment is not expected in the examination. So we have tried to do some of the examples of acyclic systems last class. And cyclic systems, I have just told you that how to approach that. Homoannular diene is that in which both the double bonds of the diene are placed in one ring, whereas heteroannular diene is that in which the double bonds are actually in two different rings. Okay. And if at all you are having a system where both homo and heteroannular diene systems are there, and you have a choice to choose, then I have told you certain rule that whenever there is some alternative, every time the system that contributes more is taken as the major system. So if homo and heteroannular, both the systems are there, then you have to consider homoannular diene as the basic system and the other double bond as the extension to that. Okay. So today's class will just try to finish this Woodward-Fraser rule for diene systems, and with few examples. Definitely these three we are going to calculate, and some more examples, and we'll finish the UV visible spectroscopy. So let us start with the first one, homoannular diene, what I have done there. So here basic value is 253, and you can see 1, 2, 3, 4. This is your basic carbon skeleton. So you have to consider all the alkyl residues 1, 2, 3, and 4. That is 4 alkyl residues, that is +20. And is there any exocyclic double bond? Yes. Is there any exocyclic double bond? Are you connected or not? Yes. Are you connected? Yes, sir, we are connected. Yes, sir. So is there any exocyclic double bond here? There is no exocyclic double bond. So this is 273. Nothing extra is here. There is no alkyl substituent, nothing, only ring residue, and that is 4. 4 ring residues are there. Coming to the other example where I have tried to have a basic heteroannular diene. I don't recall if that is the system. Then basic value is 214, and this is the system 1, 2, 3, 4. So this is a ring residue, this is a ring residue, this is a ring residue. So 3 ring residues, that is +15, and this is one exocyclic double bond. So if you number it as A and B ring, so this is exocyclic double bond with respect to ring B. So one exocyclic double bond with respect to ring B, that is +5. So nothing more than that. So this is 234.
जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन आस्क मी. द अदर सिस्टम वेयर both homo and heteroannular dienes were there, I have told you that basic value will be the higher contributor, that is the 1, 2, 3 and 4. Somebody raised hand. Have you raised a hand, somebody? No. Okay. So that is 1, 2, 3, 4. This is the homoannular diene system, so 253. And you see double bond, single bond, double bond. So this is an extension of double bond, and the whole system we can consider this. The whole system is actually like this. Is not it? This is the whole system, conjugated diene system. So this is extension double bond. So we have to write one double bond extending conjugation. So that is plus 30. And any other things, that is ring residue, you have to see 1, 2, 3, 4. 4 ring residues. 4 ring residues, that is plus 20. Exocyclic double bond? No. No exocyclic double bond. So that is 303. So this is how you can calculate. One or two more examples I'm giving you. You try to do it. Suppose we have a system like this. Okay. These two and one more. Actually, when I'm giving you different examples, I'm thinking in mind that all the aspects must be covered. Means some points are there in mind which has to be covered. Just a minute, थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा. Sorry. Let's put the double bond here. Single. No. Double, single, double. Can you do quickly? सर वो राइट साइड वाले पे आपने पेंटागन एक बना दिया है. हाँ. तो वैसा होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स का साइक्लिक बॉन्ड एक साथ. हाँ. What is the problem? ओके. So conjugation होगा इसमें, वैसे मान लें वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम है. मैं आऊंगा उसमें. All these three examples have something that has to be specifically discussed. So first one, let's say this is a homoannular system. You can see
double bond, single bond, double bond. And this is also a homoannular system, double bond, single bond, double bond. And double bond, single bond, double bond, ये system भी आप ले सकते हो, this is heteroannular system. But ऐसे तो नहीं होता है, we have to take homoannular system only, either this one or this one, you can take any one. So आप अगर इसको आप आपका main system लेते हो, then these two double bonds are actually extension. Okay. आप इसको अगर सिस्टम लेते हो तो ये दो आपका एक्सटेंशन है. तो पहला तो बेसिक वैल्यू इज 253 एंड टू डबल बॉन्ड्स एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन. यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो दिस विल बी प्लस 60. One double bond extending conjugation is plus 30. So there are two double bonds extending conjugation. So that is plus 60. Okay. And you identify your system actually. The system starts with this and ends with this. This is the whole system. So if you try to find the ring residues, this is one ring residue. This is the other ring residue. This is the third one. And then this is the fourth one. And this is the fifth one. So there are actually 5 ring residues, that is plus 25. And you see there is an alkyl substituent. This is alkyl substituent. So one alkyl substituent, that is plus 5. And you can see exocyclic double bond. Is there any exocyclic double bond? This is not exocyclic. This is not exocyclic. What about this one? Suppose you mark it ring A, this is ring B, this is ring C. So this double bond is actually endocyclic with respect to C, but this is exocyclic with respect to B. आप देख सकते हो दोनों कार्बन से एक कार्बन B में है, दूसरा कार्बन तो B से बाहर है. So this particular double bond, this one, is exocyclic with respect to B. So one exocyclic double bond with respect to B, that is plus 5. And you can now add to get the final value. Is there any problem? हाँ, और एक चीज छोड़ दिया, ये जो OCH3 है ये आपका ऑक्सोक्रोम है. दिस इज ऑक्सोक्रोम एंड इसका कंट्रीब्यूशन जो है ऑक्सोक्रोम, इसका कंट्रीब्यूशन है प्लस 6. तो सबको ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल वैल्यू. सो ये जो फर्स्ट एग्जांपल था इसमें आई वाज ट्राइंग टू शो द ऑक्सोक्रोम. तो ऑक्सोक्रोम OR हो सकता है, मींस O विथ अल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, लाइक दैट, मेथॉक्सी, एथॉक्सी. OH हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, NR2 हो सकता है, SH हो सकता है. ऑक्सोक्रोम already I have told you several examples, and accordingly you have to add the contribution. Okay, so this is your first example. Second example में क्या peculiarity है आप देख सकते हो. देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. सो दिस इज होमोएनुलर सिस्टम. एंड आपको तो पता है होमोएनुलर हेटेरोएनुलर दोनों होगा, तो यू हैव टू टेक होमोएनुलर इनटू अकाउंट. तो you have to take homoannular system as your main system, and this is a extension. Do you understand? That means this is your main system and this is your extension. But you see, double bond, then single bond, double bond. That means this double bond is not in conjugation with this. So that is not an extension. यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ये एक्सटेंशन नहीं है. सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक्चुअली आपका एक दूसरा सिस्टम है. दिस इज अनदर सिस्टम. दैट मीन्स देयर आर टू क्रोमोफोर्स एक्चुअली. दिस इज क्रोमोफोर नंबर 1. आर यू कनेक्टेड विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. फोन कर रहा है एक्चुअली. आई थॉट दैट you are disconnected. Anyway, so this is chromophore number 1 and this is your chromophore number 2.
ये जो था देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दिस इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एक ही सिस्टम है, बट यहाँ पे दो अलग अलग क्रोमोफोर है। दैट मीन्स आप अगर इस टाइप का कंपाउंड का एक स्पेक्ट्रम लोगे तो उसमें दो पीक आपको मिलेगा, बट यहाँ पे ये कंपाउंड में आपको एक ही पीक मिलेगा, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। आप ऐड करके कितना होगा ये 25 प्लस 5 30 30 30 प्लस 35 मीन्स 41 41, ये 60, दैट इज 101 101 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 354, इज नॉट इट? यू अंडरस्टैंड? आपका एक ही पिक मिलेगा आपको 354 में, वेवलेंथ 354 में आपको एक ही पिक मिलेगा, बट यहाँ पे आप देखोगे दो पिक आपको मिलेगा। ये आपको एक ही पिक मिलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 354 नैनोमीटर, बट यहाँ पे दो पिक मिलेगा, टू डिफरेंट ऑक्सोक्रोम्स, सॉरी क्रोमोफोर्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस। यस सर। तो इसका वैल्यू आप अलग अलग कैलकुलेशन कर लोगे। वन के लिए क्या होगा बेसिक वैल्यू फॉर वन? बेसिक वैल्यू इज होमोअनुलर डाइन 253, एक्सटेंशन आपका प्लस 30, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन प्लस 30, देन रिंग रेसिड्यू 1 2 3, so 3 ring residue, that is plus 15, one alkyl substituent that is plus 5, and double bond exocyclic double bond A B ring अगर करोगे आप तो ये exocyclic double bond है with respect to B, तो one exocyclic double bond with respect to B, that is plus 5. So you can add it, and again for 2 basic value is 253, and 1 2 3 3 ring residues, that is plus 15, and एक exocyclic double bond है with respect to C, one exocyclic double bond with respect to C, that is plus 5, बस हो जाएगा। अरे समझ में आया? यस सर। तो कितना कितना हुआ ये 253 के साथ ये 20 आप ऐड कर दोगे तो 273 में एक पिक आपका आएगा, एंड ये 15 प्लस 5 20 50 50 मीन्स दिस इज 303 प्लस 5 308, दैट मीन्स आपको यहाँ पे दो पिक मिलेगा। ओके, एक आपका लेट से 273, दूसरा आपका आ जाएगा 308। डू अंडरस्टैंड? आपको दो पिक मिलेगा ना, अलग अलग जगह पे मिलेगा। दैट मीन्स यू कैन शो लिटिल बिट इन अ बेटर वे लाइक दिस। दोनों ही पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है तो इंटेंसिटी में तो ज्यादा फर्क नहीं होगा, इज नॉट इट? एक एन पाई स्टार होगा, एक एन से होता, या मैंने प्रोबेबिलिटी में फर्क होता तो इंटेंसिटी में फर्क होता। यहाँ पे तो दोनों ही पाई पाई स्टार है, तो एक 273 में होगा, ये क्रोमोफोर 2 के लिए, एंड दिस इज फॉर क्रोमोफोर नंबर 1। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। अच्छा, इसको देखते हैं। दिस इज द एग्जांपल, अनदर एग्जांपल। इसमें ओनली आपको देखना है कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट होता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। बेसिक वैल्यू कैन यू टेल मी? यहाँ पे तो होमोअनुलर सिस्टम नहीं है, दिस इज हेटेरोअनुलर सिस्टम ओनली। तो बेसिक वैल्यू इज 214। सपोज ये आपका सिस्टम हो गया 1 2 3 4,
So this is an extension actually, double bond, single bond, double bond. So ये भी system के अंदर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 and 6. So one double bond extending conjugation, that is plus 30, and ring residues 1 2 3 4 5. So 5 ring residues, that is plus 25, and exocyclic double bond आप देखो, can you tell me how many exocyclic double bonds are there in total? This is an exocyclic Two. double bond. हाँ? 3. 2. देखो, exocyclic double bond or not with respect to B? Yes, So sir. one exocyclic double bond with respect to B. ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है बीच में है, this is exocyclic with respect to A. This is also exocyclic with respect to C. So this is a very interesting example where this exocyclic double bond is exocyclic with respect to two rings. Therefore, it is counted twice. Okay. So two exocyclic double bonds. Again, you have to add with respect to A and C. Do you understand? So this is a case where एक ही डबल बॉन्ड दो बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, because that is exocyclic to two rings with respect to A, with respect to C. So for every piece of exocyclic double bond, you have to count plus 5. Okay, so that is your value. So this will be 30 plus 30, 60 plus 10, 70. So 284 nanometer is the expected peak position. Do you understand the application of Woodward-Phaser rule? Can you do the examples? Exam mein you can expect one question from this, and I hope you can do it. If you practice this much at least, I have tried to cover up all the aspects of applying Woodward-Phaser rule for dyne systems. एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं, try to do this. This is the last question we'll do. Compound A, what is it? Forms three different isomer upon reduction with 1 mole of hydrogen. Can you distinguish the isomers by using UV visible spectroscopy? This is the compound. ये क्वेश्चन आपका एक बार एग्जाम में आया था, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं. इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करें? Yes, can you do this? ये कंपाउंड को आप अगर रिडक्शन करोगे with 1 mole of hydrogen, can you write down the isomers first? What are the possible isomers? If I take this compound and try to reduce with 1 mole of hydrogen, 3 isomers are formed. 3 isomers because 1 mole of hydrogen means
we can reduce any one hydrogen, double bond. We cannot reduce all the 3 bonds. So if you reduce this one, then this is the first isomer. Okay, if you reduce this one, then this is the second isomer. And if you reduce the middle one, then this is the third isomer. Am I correct? Yes? Yes, sir. So now, can you distinguish these 3 isomers? अरे यू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स, अगर अलग अलग लैम्डा मैक्स आएगा तो अलग अलग जगह पे आपका सिग्नल आएगा, ऑब्जर्वेंस पीक्स आएगा फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सो ये होमोअनुलर डाइन है, ये हेटेरोअनुलर डाइन है, बट ये जो देखो आप, ये दोनों का तो आप कर लोगे. कैसे करोगे? ये साइड में भी आप चाहोगे तो मैं कर दूंगा. दिस इज होमोअनुलर डाइन मींस 253 and ring residues 3 ring residues, so plus 15 and 1 exocyclic double bond plus 5. So this is 273. For this one, this is 1 ring residue, this is 1 ring residue, this is 1 ring residue, so 3 again, but basic value is 214 plus 15 and 1 exocyclic double bond, that is plus 5. So this is 234. So इसका पीक 273 नैनोमीटर में आएगा, इसका पीक आपका 234 नैनोमीटर में आएगा. बट व्हाट अबाउट दिस वन? इज दिस ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम? No, sir. सो दीज आर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स. सो ये आइसोलेटेड क्रोमोफोर है, and isolated localized double bonds means observance will be around 171 नैनोमीटर. मैं पहले बोल के रखा हूं आपको. बट ये कन्वीनियंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम नहीं है. आपका 200 से नीचे है ना, तो आपको नंबर 1 के लिए 273 में मिलेगा, नंबर 2 के लिए 234 में मिलेगा, एंड नंबर 3 के लिए आपका कोई भी पिक 200 to 800 नैनोमीटर में नहीं मिलेगा. So cannot you distinguish these 3 compounds? Yes? Yes, sir. बस that's all. That's all. तो कोई भी क्वेश्चन आपको इस बेसिस में आएगा तो आपको कैलकुलेट करना है वुडवर्ड फेजर रूल के हिसाब से. अब देखना है कि आपका एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट वहां पे भी है, अगर आप चाहो तो माइंड में रख सकते हो. एक्चुअली यूवी विजिबल पिक्स आर थोड़ा ब्रॉड पिक होता है, तो मिनिमम एक 40 सेंटीमीटर 40 नैनोमीटर का एक डिफरेंस होना चाहिए, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश. अदरवाइज ओवरलैप्ड हो जाता है, तो वो थोड़ा देखना है. मींस सपोज एक का पीक आपका 273 में आता है एंड दूसरे का पीक सपोज 290 में आता है कि 280 में आता है, तो दोनों पीक को डिस्टिंक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है. ये एक लॉजिक माइंड में रखना. एटलीस्ट 40 नैनोमीटर या 40 नैनोमीटर से ज्यादा होने से अच्छा है. इट इज वेरी क्लियरली वी कैन डिस्टिंग्विश द पिक्स. आया समझ में जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. एकदम 2 पीक अगर एकदम आसपास हो जाएगा, एक 273 में, एक 280 में, इज नॉट इट वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि ये तो शार्प लाइन नहीं है ना. वी आर टॉकिंग ऑफ लैम्डा मैक्स ओनली, मींस द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पीक ऑफ द सिग्नल. बट सिग्नल तो वाइड है, तो इसलिए थोड़ा मिनिमम 40 नैनोमीटर का डिफरेंस होने से इट इज क्लियरली पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द पिक्स. अदरवाइज very close peaks, that problem to distinguish. So this is all about your UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy से 3 लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है. एक तो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस एग्जांपल्स. सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैम्डा मैक्स. एंड थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमने कॉन्जुगेशन इफेक्ट
ऑक्सोक्रोम इफेक्ट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट डिस्कशन किया था. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल दी थिंग्स विल कम टुगेदर. वन और टू factors may be asked. And third question is this one, lambda max calculation. अगर प्रायोरिटी में बोलूं तो पहला प्रायोरिटी lambda max calculation, सेकेंड प्रायोरिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग, एंड थर्ड प्रायोरिटी आपका different types of transitions with example. Okay. Now we will go to the second spectroscopic technique, that is infrared spectroscopy. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा मैं स्लाइड भी पैरेलली यूज करूंगा. आई एम गोइंग टू यूज स्लाइड्स आल्सो, एंड आफ्टर द क्लास आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स आल्सो फॉर दिस. सो infrared spectroscopy, what you study? Already you know that in infrared spectroscopy, मैं आपको बोला था कि we are interested in the vibrational transitions, V0, V1, V2. This is energy, this is internuclear distance. हम अभी एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन का बात नहीं कर रहे हैं, एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरा वाइब्रेशनल लेवल का बात कर रहे हैं. तो इसके लिए हमको थोड़ा लो एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन द इंफ्रारेड रीजन. ऑलरेडी ये सब चीज मैं इंट्रोडक्शन में आपको बोला था. तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को स्टडी करने के लिए या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को स्टडी करने के लिए आपको इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है. We need a less energy than the energy required for electronic transitions, which is available in the infrared region. तो visible से थोड़ा लोअर एनर्जी. तो विजिबल से लोअर एनर्जी इज इंफ्रारेड रेडिएशंस. तो कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर आप अगर इंफ्रारेड डालते हो तो दैट विल ब्रिंग द वाइब्रेशनल चेंजेस और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस. तो हमको वाइब्रेशनल ट्रांजिशन स्टडी करना है. अच्छा, तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब स्टडी करते हैं, मैं आपको बोला था यूवी विजिबल, थोड़ा मैं आपको याद दिलाता हूँ. यूवी विजिबल का जो चार्ट पेपर था, हम जहाँ पे कलेक्शन करते थे स्पेक्ट्रम, कैसे था? यहाँ पे we used to take observance और इप्सिलॉन. यहाँ पे we used to take what? वेवलेंथ. याद है? तो वेवलेंथ लेते थे ना, 200 to 800 नैनोमीटर. ऑब्जर्वेंस का तो कोई यूनिट नहीं, आपको याद होगा. ऑब्जर्वेंस इज लॉग आई नॉट बाई आई. तो आपको पिक इस तरह से आता था. सो दिस इज योर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. इफ यू लुक एट इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का जो चार्ट पेपर होता है, वहां पे देखोगे आप, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ट्रांसमिटेंस लेते हैं. मैं ऑलरेडी आपको बोल के रखा हूं what is observance and what is transmittance. याद है? तो transmittance is I by I naught, and usually I naught is more. So when I write I by I naught, that is a fraction. So we often multiply 100 and write it as percentage transmittance. So percentage transmittance, यहाँ पे we are not plotting observance. आप ऑब्जर्वेंस भी प्लॉट कर सकते हो. आजकल तो सब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. आप ऑब्जर्वेंस में आईआर को प्लॉट कर सकते हो, ट्रांसमिटेंस में भी प्लॉट कर सकते हो. बट जो कन्वेंशनल वे है, आप देखोगे कोई भी बुक ओपन करके आर्बिट्रली देखो, सभी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में प्लॉट होता है. एंड दिस साइड, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेव लेंथ, here we take wave number, न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोग लेते हैं. ओके, एंड द आईआर यूजुअली 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक हम लोग इसको देखते हैं. उससे नीचे भी जाते हैं, 400
और उसके नीचे भी जा सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग 4000 to 667 या राउंड अप करके मैं 600 लिखा हूं, इसी रेंज में हम लोग आईआर स्पेक्ट्रम को कलेक्ट करते हैं। एंड आईआर स्पेक्ट्रम किस तरह से दिखता है देखो, normally the IR spectrum looks like this. This is just a typical IR spectrum का मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मली IR स्पेक्ट्रम, ये जो अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो दो तीन चीज आप मार्क कर सकते हो। एक तो ये कि ये अपवर्ड पिक है, ये डाउनवर्ड है, obvious because this is observance, this is transmittance. So transmittance peak always you will get this difference. Second thing is that ये थोड़ा सेकेंड थिंग इज दैट ये जो है ज्यादा ब्रॉड है एंड राउंडेड टिप है। यहां पे आप देखोगे शार्प टिप है, ब्रॉडनेस थोड़ा कम है, बस इतना ही डिफरेंस है। डाउनवर्ड लॉगरिदम नहीं है इसलिए रेंज कंसाइज हो गया है, कन्फाइन हो मैंने गया। विड्थ का बात कर रहे हो तो ब्रॉडनेस हाँ, लॉगरिदम नहीं है इसलिए नो ज्यादा नो शार्प। नो 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 आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। एक्चुअली ये जो ब्रॉडनेस ऑफ द बैंड्स है, ब्रॉडनेस डिपेंड करता है कि आपका एक ट्रांजिशन है या मल्टीपल ट्रांजिशंस उसके साथ एसोसिएटेड है विथ वेरी क्लोज वेवलेंथ्स। आप देखो ना, जो ब्रॉडनेस कहाँ पे होता है, जहां पे आप देखोगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट्स आर क्वाइट लार्ज, सो दैट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस यू आर गेटिंग विथ ए स्मॉल वेरिएशन इन वेवलेंथ। तो आपको एक साथ इतना सारा ट्रांजिशन जो होता है तो आपको इतना पास पास वेवलेंथ होता है कि आपको नेकेड आई में लगता है कि एक ही ट्रांजिशन है, बट दैट इज मल्टीपल ट्रांजिशंस व्हिच ब्रॉडेन्स द वेवलेंथ, सॉरी द स्पेक्ट्रम। क्या होता है ना, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आप स्टडी करते हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का बात करते हो, तो कैन यू अवॉइड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस? जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत ज्यादा एनर्जी में होता है, ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर द मोस्ट ब्रॉड ट्रांजिशंस। जब आप वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में आओगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी में बाय इंफ्रारेड एनर्जी देके यू कैनॉट ब्रिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, okay, so vibrational transitions are only associated with rotational transitions maximum, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सबसे ब्रॉड, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस उससे कम ब्रॉड, एंड इफ यू गो टू रोटेशनल ट्रांजिशंस आपको एकदम लाइन मिलेगा, यू विल नॉट गेट एनी ब्रॉड बैंड बिकॉज रोटेशनल ट्रांजिशंस आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी अदर ट्रांजिशन। सो ब्रॉडनेस इज एक्चुअली एट्रिब्यूटेड टू मोस्टली मैंने नंबर ऑफ मल्टीप्लिसिटी इन द ट्रांजिशंस, उसके साथ है, लॉगरिथम के साथ कुछ नहीं है इसका, ओके। सो ऑब्जर्वेंस एंड ट्रांसमिटेंस पीक्स में डिफरेंस ये, अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्वेंस कर दोगे तो फिर ये पीक भी इस तरह से अपवर्ड आपको दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं कि ये पीक आपको डाउनवर्ड ही दिखेगा, ये ट्रांसमिटेंस लिए है इसलिए इसका पीक जो है वो डाउनवर्ड दिख रहा है, एंड थोड़ा पीक शार्प होता है। जो टिप ऑफ द पीक है आप देखोगे ये सब शार्प होता है नॉर्मली। एंड और एक चीज आप देख भी सकते हो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, वेव नंबर यहाँ पे है 1500। 1500 के बाद मीन्स लोअर एनर्जी, बिकॉज दिस इज वेव नंबर ना, वेव नंबर एंड एनर्जी आप देख सकते हो E इज इक्वल टू व्हाट, hc बाय लैम्डा और hc न्यू बार। तो एनर्जी एंड वेव नंबर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो जो लो एनर्जी में जो आप देखोगे बहुत सारा पिक्स आपको एक साथ मिलेगा, जम्बल्ड पिक्स, ओके। ये इसका एक वेरी पिकुलियर कॉन्सेप्ट है, मैं बोलूंगा आपको आज एंड व्हेन आई विल
enter into the topic. But this is the vital infrared region, 4000 to 667 or 600 centimeter inverse. ओके इसका आउटसाइड आपका फार एंड नियर आईआर रीजन है, बट उसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत कम है. वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन 4000 टू 667 एंड उसमें से दो डिवीजन इसमें है, आप देख सकते हो. मैं एक्चुअली अगर वाइटल इंफ्रारेड रीजन का बात करूंगा तो ये 4000 टू 600 सेंटीमीटर इनवर्स है. इसमें से ये जो 1500 टू 600 है इसको हम फिंगर प्रिंट रीजन बोलते हैं, एंड ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं डायगोनिस्टिक रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन. नॉर्मली एक कैरेक्टराइजेशन रीजन भी बोलते हैं. नॉर्मली हम लोग एक्चुअली इसमें ही इंटरेस्टेड है 1500 टू 4000 एज ए बिगिनर. देखो एज ए बिगिनर वी हैव टू फोकस ऑन दिस रीजन 1500 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स. हमारा ज्यादा इंटरेस्ट 1500 से नीचे नहीं है. क्यों नहीं है मैं बताऊंगा आपको. एंड 1500 टू 600 जो होता है उसको फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं. व्हाई फिंगरप्रिंट? आपको पता होगा कि fingerprint of two persons never match. That means the spectral pattern in this 1500 to 600 centimeter inverse, ये जो spectral pattern here दिखाया गया है, this spectral pattern is a characteristic of compound and no two different compounds have same spectral pattern in the fingerprint region. तो यहाँ पे एक आपका माइंड में आ रहा होगा कि सर आप फिंगरप्रिंट रीजन भी बोल रहे हैं एंड ये भी बोल रहे हैं कि नॉर्मली हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट है. अगर आप फिंगरप्रिंट रीजन बोल रहे हैं, नो टू कंपाउंड्स ऑफ सेम स्पेक्ट्रल पैटर्न इन दिस रीजन बोल रहे हैं, फिर भी इसको कैरेक्टराइजेशन के लिए क्यों यूज नहीं करते? सही पूछ रहा हूं ना क्वेश्चन? Yes, are you getting it what I'm saying? Yes, sir. So fingerprint region हम इसलिए बोलते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, बट कैरेक्टराइजेशन के लिए फिंगरप्रिंट रीजन को हम यूज नहीं करते. उसका रीजन अलग है. उसका रीजन ये है कि इस रीजन में हमको बहुत सारा पीक मिलता है एंड ऑफन पीक्स आर ऑब्स्कर्ड, एक के ऊपर एक रहता है या जम्प्ड. तो एक बिगिनर के लिए उसको स्टडी करना डेफिनेटली मुश्किल है एंड हम लोग उसको यूज नहीं करते. हम लोग 1500 से ऊपर का जो रीजन है उसको यूज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पिक्स आप देखोगे 1500 से ऊपर बहुत कम होता है, शार्प होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए या मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. इसलिए उस रीजन में जो स्पेक्ट्रल पैटर्न होता है उसको हम कैरेक्टराइजेशन जोन बोलते हैं या फंक्शनल ग्रुप जोन भी बोलते हैं या डायगोनिस्टिक जोन भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ the IR plot and how it looks like and which region is vital for you. So if you look at this slide, can you see the slide? आपको स्लाइड दिख रहा है तो? Yes, sir. आप देख सकते हो वही स्लाइड है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रीजन ओनली 4000 टू 667. दिस साइड इज वेव नंबर एंड दिस साइड इज वेव लेंथ. मैं वेवलेंथ में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं बिकॉज मेरा तो आईआर का ग्राफ वेव नंबर में है, तो आई हैव रिमेम्बर्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर दैट आई हैव टू फोकस ऑन 4000 टू 667. इसको राउंड अप करके मैं 600 लिखा हूं, याद रखने के लिए इजी होगा. तो इससे ऊपर हायर एनर्जी में भी आप जा सकते हो, नियर आईआर, लोअर एनर्जी में भी जा सकते हो, फार आईआर.
and spectroscopic techniques are available to cover up this range of wavelength also. बट ये अभी स्कोप में नहीं है, उसको बाद में देखेंगे. तो ये इंफ्रारेड रीजन, बेसिक वाइटल इंफ्रारेड रीजन है 4000 to 667. ओके, बाकी जो 1500 का बात कर रहा था उसको भी बोलूंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट थिंग इज दैट, इसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? वाइब्रेशन ना, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो लेट अस लुक इनटू व्हाट आर द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस पॉसिबल. तो कोई भी एक मॉलिक्यूल जब आप लेते हो तो मॉलिक्यूल्स आर नॉट एक्चुअली रिजिड स्ट्रक्चर्स. मैं आपको पहले भी बोला था कोई दूसरा कनेक्शन में. एंड मॉलिक्यूल्स कीप ऑन वाइब्रेटिंग. वाइब्रेटिंग मीन्स देयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल continue to change. Okay, so molecules are not rigid, rather they are flexible, and there is always there is a possibility of different vibrations. So suppose let us take a 3-atom 2-bond system. Okay, well, this is the minimum thing to understand the different types of stretching and bending, or different types of vibration. Actually, basically, if you look at vibrations can be classified into 2 types. One is your stretching, another is your bending. Okay, so let us say stretching. Stretching में भी category है. I can show you. So I have taken 2 bonds and 3 atoms. You can see. Okay, 3 atoms, 2 bonds. इसको आप बॉल स्प्रिंग मॉडल बोल सकते हैं, टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. हम क्या कर सकते हैं? देखो, जब स्ट्रेचिंग का बात करते हैं तो आई कैन टेक बोथ द एटम्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम. डू यू अंडरस्टैंड? मैं खींच रहा हूं बाहर, दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहा हूं. तो बाहर लाऊंगा एंड फिर आई विल टेक इट इनसाइड. पुल, पुश. Are you understanding what I'm saying? This is just like a ping pong ball. Means I'm not saying that I will stretch it and keep it stretched like that. So vibration means it will come out, but thing is that दोनों एक ही direction में आ रहे हैं. Out, in. Do you understand what I'm saying? Yes? अरे समझ में आ रहा है? ये बाहर आएगा एक साथ एंड एक साथ फिर अंदर जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. सो देन व्हाट इज ऑन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग? ये तो नाम से पता चल रहा है कि और एक होना चाहिए. ऑन सिमेट्रिकल मीन्स आप एक को बाहर लाओ, एक को अंदर ले जाओ, लाइक दिस. यू ब्रिंग आउट एंड पुश इट इनसाइड. देन again the reverse one. Do you understand my hands movement? Can you see? Are you getting my point? एक अंदर, दूसरा बाहर, फिर ये अंदर, ये बाहर. Alternate. Do you understand? Yes, sir. Asymmetrical stretching. So this is symmetrical stretching and this is asymmetrical stretching. So 2 possibilities are there as far as stretching is concerned. फिर बेंडिंग का बात करते हैं. एक्चुअली पॉसिबिलिटी विल इंक्रीज विथ 3 atoms 2 bonds. दीज आर द पॉसिबिलिटीज. बट मॉलिक्यूल, आप अगर सिंपल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हो, मिथेन, मिथेन में तो 4 बॉन्ड है. इज नॉट इट? यस. अरे मिथेन में 4 CH बॉन्ड्स है कि नहीं? माने विंटर में एक्चुअली टेम्परेचर कम हो गया इसलिए आपका रिस्पांस कम है, या आप लोग सब कनेक्टेड नहीं हो? Yes, sir. 4 bond है. 4 connected है. Connected. अच्छा, okay. Now my point is that when I'm sharing the screen, I cannot see you. That is why when I'm asking something, you should have a response, yes or no, so that I can understand, I will feel that I'm in connection. Okay, anyway, so my point is that
नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब मॉलिक्यूल में बढ़ जाता है, डेफिनेटली स्ट्रेचिंग का जो नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस या वाइब्रेशनल पॉसिबिलिटीज, ईच पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं कि वाइब्रेशनल मोड. सो दिस इज वन मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक तरीका है, ठीक है. सो नंबर ऑफ मोड्स that will increase actually with number of molecules and number of atoms and bonds in the molecule. मैं बोलूंगा आपको कैसे, फॉर्मूला भी बोल दूंगा कि कैसे आप टोटल वाइब्रेशनल मोड्स को कैलकुलेशन कर सकते हो इन ए मॉलिक्यूल. ओके, सो बेंडिंग में अब देखो, मैं आपको थोड़ा पॉसिबिलिटी दिखाता हूं. सपोज आप क्या कर रहे हो ना, दोनों को एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. अब देखो, you can look into my hand. This is the central atom. These two atoms, we can imagine the tip of my fingers. So you can move the atoms in this clockwise direction or anti-clockwise direction. You see, this is something like oscillation, and दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट राइट, बट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. That is very, very important. And another possibility is there where they will move towards each other. That means like this. That means towards away, just like scissor movement. These are some of the possibility I'm trying to explore with 3 atoms, 2 bonds. And interestingly, these two are in plane. We are not disturbing from the plane. We are not taking the atoms from the plane. Similarly, we can have a bending vibration like this. Cannot I do like this? Both the atoms I will take up from the plane, फिर down, up, down, up, down. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. Another type of motion you can see. एक up, दूसरा down. You see, like this. Twisting. The previous one, rocking. So different types of vibrations are possible. This is out of plane. So at least these 6 different modes are there with 3 atoms and 2 bonds. But these are the basic modes of vibration. Number of twisting modes, number of scissoring modes, number of rocking modes, number of wagging modes, number of symmetrical stretching might be there in a molecule, but these are the basic vibrational modes in a molecule. And if you look at this slide also, I have shown you the same different types of vibrational modes. Whatever I have explained, symmetrical stretching, asymmetrical stretching, rocking, your scissoring, your wagging, twisting, these are some of the vibrational modes. So my point is that actually यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, इसमें 3 atoms and 2 bonds को लेके एक्सप्लेन किया हूँ. बाकी 2 बॉन्ड यहाँ पे मैं आइडियल छोड़ दिया हूँ. आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों सर ऐसे किए हैं. इसका रीजन एक ही है. I have tried to take in a carbon center here. So because we are interested in organic compound, so organic compound means carbon is the base. तो कार्बन तो टेट्रावैलेंसी है, तो इसलिए मैं इसका 2 वैलेंसी लेके आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन को एग्जिबिट किया हूं. बाकी 2 को इस तरह से सिंपली आइडियल छोड़ दिया हूं, बट ये भी पार्टिसिपेट करेगा एंड डिफरेंट मोड्स वी आर गोइंग टू गेट. इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया. ओनली 3 एटम्स एंड 2 बॉन्ड्स लेके किया. यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो कार्बन सेंटर अगर इमेजिन करोगे तो बाकी 2 वैलेंसी इसका रहेगा एंड यू कैन लीव देम आइडियल, बिकॉज वी आर ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर द पॉसिबल वाइब्रेशंस. ओके, तो आपको एक आइडिया हो गया तो कि vibrational how the vibrational modes are there, different vibrational modes are there in a molecule. Yes, Yes, sir. अच्छा, ओके. कितना टाइम है आपके पास? क्लास है क्या अभी? Yes, sir. अभी Yes, class- yes, sir. अच्छा, मैं आपका 2-3 क्लास, 1 या 2 क्लास बीच में नहीं ले पाया था,
इस वीक में आई डोंट वांट टू कीप यू एंगेज्ड इन द नेक्स्ट वीक आल्सो, आई वांट दैट इस वीक में आपका कहीं पर खाली है वेयर आई कैन टेक, क्योंकि टाइम थोड़ा निकालना पड़ेगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा। इस वीक में कुछ एग्जामिनेशन वगैरह है आपका? सब बायो का है शायद से। अच्छा, So we have bio assignment, we बिकॉज have केमिस्ट्री का कोई एग्जाम इस वीक में नहीं होगा, आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड, नो then we एग्जामिनेशन have विल बी देयर। computer exam as well. ओके, ठीक है। Sir, chemistry lab also. केमिस्ट्री And लैब का Chem इस वीक में एग्जाम नहीं है, नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। इस वीक में ओनली डिफॉल्टर प्रैक्टिकल्स होगा, आपका रेगुलर प्रैक्टिकल क्लासेस इस वीक में ऑफ रहेगा। इंफॉर्मेशन मिला तो आपको? हैव यू Yes, गॉट द sir. इंफॉर्मेशन? हाँ, तो आपका जो रेगुलर प्रैक्टिकल क्लास कौन सा टाइम में होता है वीक में केमिस्ट्री का? वेंसडे सर। बुधवार को कौन सा टाइम? 8 सर to 9 to 8 11, to 11. सॉरी 8 to 11 सर, सॉरी 8 to 11। तो अच्छा, आपका 8 to 11 में कुछ डिफॉल्टर करोगे? कितना स्टूडेंट है आपका डिफॉल्टर में पता है कुछ? मीन्स मेनी स्टूडेंट्स ऑफ डिफॉल्टर एग्जाम मैंने क्लासेस उस दिन 8 to 11 में? So we don't have the exact Sir. number. We can give you the exact number by tomorrow. अच्छा, ओके, मैं मिल जाएगा तो मैं डिपार्टमेंट में पूछ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मैं चाहता था उसी टाइम को अगर हम थोड़ा यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज इन आवर डोमेन। हमारा ही क्लास है, लैब क्लास, आपका क्लास भी नहीं होना है। तो आई थिंक अगर आप लोग थोड़ा बुधवार को मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो इट विल बी बेटर। मैं पूरा उस क्लास में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कशन करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टोटल चैप्टर में से जो जो इम्पोर्टेंट चीज है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया, नॉस्ट इक्वेशन एप्लीकेशन एंड कमर्शियल सेल्स, आई विल बी ट्राइंग टू डिस्कस इन दैट क्लास। अच्छा होगा अगर आप ज्वाइन करोगे, थोड़ा आप डिस्कशन कर लो कितना स्टूडेंट का डिफॉल्टर है। टुमारो वी हैव ए क्लास ना? So tomorrow we have a class. Sir, हाँ। day after. नाम ट्यूसडे आपका क्लास नहीं है मेरा? Sir, tomorrow we have a Sir, class. sir, lab का है वो। Yeah. हाँ हाँ, लैब का, हाँ Sir, ठीक tomorrow है, we can actually give you a confirmation एग्जैक्टली। for Wednesday's तो timing. बट We can बट take from 9 to 11 or 9 to 10. हाँ, बट आई विल बी हैप्पी इफ वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम बुधवार को। मैं आपको बार बार बोला था, आई डोंट वांट टू कीप यू एंगेज्ड आउटसाइड द क्लास आवर्स, बिकॉज दैट इज योर प्रिपरेशन टाइम। सो बुधवार को लैब टाइम अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, मुझे तो बहुत पेन होगा बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम, मेरा तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं So है। if you are free on Thursday from 8 to 9, so sir, you have a class from 9 to 10 on Thursday. So you can take No, the that I will take, continuation but from- बुधवार को लैब क्लास एटलीस्ट 3 घंटा नहीं होने से भी 1.5 घंटा, आधा 1 घंटा 1.5 नहीं घंटा सर, तो मैं अगर हो बोल रहा हूँ सकता है। कि थर्सडे को सुबह खाली है, ठीक है, so मैं 8 लूंगा, से 9 खाली है। ठीक है, आई विल बी टेकिंग दैट, नो डाउट। बस आई डोंट वांट टू आल्सो कीप यू एंगेज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। इसी वीक में जो 2-3 क्लास मुझे एक्स्ट्रा लेना है, इसी वीक में ले लूंगा, सो दैट नेक्स्ट वीक में आपको थोड़ा खाली मिलेगा। तो Also, बुधवार one को, more question. After हाँ, end sem, like, will we have any of this class or will we straight away move to our next like semester? सेमेस्टर के बाद तो नेक्स्ट सेमेस्टर आपका होगा, उसमें और ये क्लास क्या? Like, there'll be any class for paper showing or paper discussion of that sort, or will we हाँ, ये directly तो move? होगा, ये तो कॉपी चेकिंग ये सब तो चलता रहेगा। Okay. So since our exams are getting end on 19th, so after that we'll be probably not meeting in that sort. नो क्लास विल बी देयर, नो क्लास विल बी देयर। Okay, योर sir. थर्ड सेमेस्टर जो भी आपका, ये सेकंड सेमेस्टर ना, सेकंड सेमेस्टर Second का जो भी semester. सब्जेक्ट्स होगा वो सब्जेक्ट का सब क्लासेस होगा। Okay. ठीक है, सो एनीवे मैं थोड़ा टाइम निकालूंगा, मेरा तबीयत तो अच्छा नहीं था। आपका जो मिड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉब्लम्स था, या कुछ लोग जो मैं बोला था मेंशन किए थे ग्रुप में, I will be calling them to see their papers and clarify the doubts. Know that मैंने कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बट जो लोग मेंशन किए हो
group में definitely they should join to see their copies and marks also. So thank you. मैं infrared and infrared spectroscopy पूरा upload कर देता हूँ, ये slides भी upload कर देता हूँ, थोड़ा आप देख के आओ. Tomorrow we'll try to discuss that. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sorry. Time it is taking, and then we will complete your viva by Thursday. Thursday we will complete, and next Monday I will take the remaining assignments, the presentation. I think we can start with the presentation. Achha, you have completed. I'm so sorry. You have Yes, ma'am, completed. we have completed. Yeah, sorry. The next Monday, I will do that class assignment, that test. So what are the things that are remaining that we will discuss, and we'll do Monday. I'll be winding up your syllabus. Let's see. Okay. Yes. So now let me start with the phonetics. What exactly is phonetics? Phonetics means it is the scientific study of sounds. Okay. Normally you see your English alphabets, and they are 26 in numbers, out of which 5 are vowels and rest 21 are consonants. Okay, so depending when we speak something, or when we utter something, how do we do? Or when we before speaking something, we try to listen to what the other person is saying. So when the other person is saying something, you try to grasp it by the sound he or she utters. Okay, now when I'm saying, suppose I'm saying speaking. Okay, so I am saying speaking, and then you try to interpret the meaning of speaking in your own mind. But then again, sometimes what happens, it depends on the sounds also. So what is that sound? Basically the sound means analyzing something out of the sound that you hear. Okay, so that is the meaning of basically phonetics, I would say. And same thing happens in case of alphabets also. When alphabets also, it is derived from the way you see something and you interpret. But phonetics is something you hear something and you interpret. Okay, now I will show you, as we know, as I was saying, that there are 26 alphabets in English. Similarly, there are 44 sounds in English language. Okay, and out of that they also have vowels, and they also have consonants. So what is okay, so there are 44 sounds, out of which 12 are vowel sounds, 8 are diphthongs, and let me just show it to you before 1 minute. Okay, so we are discussing here phonetics. As just now we discussed that there are 24 alphabets, out of which 21 are consonants and 5 are vowels. Now we will come to the sounds. 44 sounds, out of which 12 vowel, 8 diphthong, and rest 24 are consonants. I'll discuss in details. Just 1 second. Before that, I would give you an introduction. So now, what is a vowel sound? Vowel sound is that which is uttered when there is no interference between your lips and the sound. Okay.
That is how a vowel sound is produced. Now it consists of one unit of sound. So and then what is a diphthong? Diphthong means it is a combination of two vowel sounds, and it is also known as gliding vowels. Gliding vowels. Okay, now why is it called gliding vowels? Because while uttering this sound, our tongue glides from one vowel sound to another. That is why it is known as gliding vowels. And consonants, they get blockage. When they get blockage in the lungs, we have plosive consonants. When they get blocked in the nose, it gets nasal consonants. So you don't have to learn all these things. It is only for your knowledge. What you have to learn, I will tell you. Just two questions you have to prepare. One is your problem sounds and the other one is mother tongue interference. For that, I will show you the slides and we will discuss in details. But these are the preliminary things or the background information. Okay. Now, now what is a received pronunciation? I'll discuss certain things. Just 1 second. Received pronunciation, mother tongue interference. Okay, accent, dialect. These are the 4 things that we will discuss before coming to the sounds. Okay. Now, what is a received pronunciation? Before that, I'll discuss what is a dialect. Dialect is a particular language which is spoken by a group of people living in a particular geographical area. Okay, so we are divided by geographical areas by the boundaries, I would say. Now let's come to the come to India. We'll not go outside. We'll discuss about the cases of India. People who are in the western part of India, the language they speak is somewhat similar among themselves, somewhat. Okay, not completely similar, and that is different from the language that is spoken by the people who are in the eastern part of India. Okay, similarly between north and south also. And now come to more confined area, come to the east. Okay, now the language which is spoken by the people of Odisha is not the same as the language which is spoken by the people of West Bengal or Assam. Okay, now again come to Odisha. The language which is spoken by the people who are in and around Bhubaneswar, that language is not completely same as the language which is spoken by the people who are in the interiors of south of Odisha, or who are in the interiors of western Odisha, or who are in the interiors of northern Odisha. Okay, so now then what is that language? The language which is spoken in and around Bhubaneswar, because Bhubaneswar is a cosmopolis. Okay, so that language which is spoken, that is you can say that is also known as received pronunciation, because that is the most sophisticated form of Odia that is spoken. Similarly, received pronunciation means the language which is spoken in and around the sophisticated area of London, because London, I mean English was originated from there. English originated from there, and that is why English is also known as Queen's English, and even received pronunciation is also known as Queen's English. Okay, but then after that so many changes were made and this thing happened. Now I'll again discuss about the dialect. Now come to the Hindi speaking area. I'll just talk about, say for example, I'll talk about Bihar. Okay, the language which is spoken, Bihar has got different types of Hindi. I mean, we cannot say that Hindi is the language that is spoken in Bihar. Okay, there are different forms of language, different forms of dialect. You can say Bhojpuri is a dialect, you can say Maghi is a dialect, you can say Maithili is also a dialect. Okay, so these are different types of dialect which is spoken, and it is completely dependent on the geographical area. So same thing happens in almost all the parts of the country depending on the geographical region. Okay, so this is received pronunciation, this is dialect. Now I'll come to the accent. Accent also, it is the way we speak a language which is not our mother tongue. That is why a person might have Indian and a person might have English accent, British accent, a person might have American accent, a person might have
African accent, a person might have Australian or New Zealand accent. Okay. So that is the meaning of accent. Now come to the mother tongue interference, which is most important. When we speak a language which is not our mother tongue, what we do is we try to understand the meaning and convert it into our mother tongue, and then we speak in the language which is, say for example, which is English. Okay, so that is an example of mother tongue interference, as a result of which what happens is there are so many words which are I mean, when you convert it, okay, like for example, मैं वहां गया था, so if you convert it into English, it will be I there go was. Okay, as a result of which the syntax also changes and also the meaning. So that is what happens when we use mother tongue interference, and that causes miscommunication also. Okay, so that is the meaning of mother tongue interference. When you try to convert a language from your mother tongue into the into English, that it causes errors in syntax. It causes also difference in meaning. That as a result of which the mother tongue interference takes place. This is the meaning of mother tongue interference. Okay, now again we will come back to this sounds of English. Okay. Yes, so for, as I was saying, 44 sounds, and now what is as I said, vowel sound is which there is no blockage of air, and the vowel are categorized into monophthong, and diphthongs. Okay, so now what is a monophthong? Monophthong is a sound which is produced by one unit, just one sound you will hear. Whereas diphthong is, as I said, combination of two or more vowel sound, and and it is also known as I was saying, it is also known as gliding vowels. Now monophthong e, a, in this way, whereas diphthong is a, ow in this way. I'll share with you as the correct sound of all the vowels and the diphthongs and the consonants. Okay, just give me a minute. I will share with you that, and then I will move on to the rest, the most important part, that is this one. What should I say? Mother tongue interference and problem sounds. Okay, just one second. Just one second. Hello. Good morning. Again. The public cloud wasn't built to handle everything, but that's okay, because now you can bring a new kind of cloud experience.
Okay, so now I'm just starting this audio. You can hear it. Just I'm sharing the screen also so that it will be seen. So this is first I'll just share this vowels and diphthongs and then 1. E. Bean. E. Many. 2. E. Tip. 3. Air. Hair. Air. Met. 4. A. Pan. 5. Sir. The. 6. Fun. 7. Card. 8. Moon. You. 9. Shook. 10. Shore. 11. Lock. 12. Ear. Deer. 13. A. Same. 14. Ow. Loud. 15. O. Go. 16. I. Hide. 17. Curious. 18. Oi. Choice. Okay. So now we'll come to the consonants. 19. First. 20. Van. 21. Thick. 22. These. 23. Saw. 24. Zen. 25. Shh. She. 26. Shh. Casual. 27. Hard. 28. Pick. 29. Bed. 30. Team. 31. Dine. 32. Code. 33. Get. 34. Witness. 35. Choose. 36.
jet. 37. Watch. 38. Rug. 39. Yet. 40. Look. 41. Tall. 42. Mood. 43. Neck. 44. Song. Okay, so these are the sound. I hope you are clear, or if you have any doubt or if you want to listen again, let me know. Okay. Now I will start the screen sharing and of this slides, which we are more interested in, the phonetics thing. Okay, so this is phonetics and mother tongue interference that we are going to do. Okay, and so just let you see, in Indian English has many a time been unintelligible by the British listeners or the native Englishmen. Many languages have migrated into English, and many variations of English have been developed. The link between speech sounds and spellings has been broken, unlike in many other languages. Indian languages are all phonetic in nature. This difference has been creating a barrier in front of Indian mass to make proper pronunciation. You see, these are the reasons. Always what we do is, sometimes because of the accent, we are not able to understand. That is one important reason. Then there are so many languages which has been migrated into English, as a result of which only Indians will not be able to understand. Only Turkey will not be able to understand. Okay, in this way, this has happened. Then the link between speech sounds and spellings. We have the habit of understanding things in the way it is pronounced, and then we write the spellings, or we see the spelling and we pronounce it in that way. So that again creates problems. And then there are so many words in English, in our mother tongue or in India, the languages are mostly phonetic in nature. As a result of which, it creates barrier. For example, we have a word like na, which is not pani. Some place they say for pani, they say pani. Okay, so that again creates, that is not there in English. So that creates problem. So these you can write these four, and then there are others also. Indian speakers acquainted with many phonetic languages often tend to replace English sounds by their Indian equivalents that I was telling. Then wrong accentual patterns prevail, leaving important words unaccented in the connected speech. Sometimes what happens that in Indian language we have some stressed word which stress part of the word, but that is not there in English. Like for example, as I said that suppose you say water. Okay, you think that in your mind you think WA should be emphasized, but then it is not. You like water. Okay, or sometimes you see that you think that TER should be accented, but then it is not. In this way, wrong accentual pattern prevail, leaving the most important word unaccented in the connected speech. That is what I was saying. Then faulty rhythmic patterns. Rhythmic pattern means there is a snake in your room. Okay, so say for example, when you say there is a snake in your room, you are emphasizing on snake. Then you say that there is a snake in your room. But sometimes it may so happen that you are not emphasizing on snake, you are emphasizing on room. So and then you are confused, and then that creates faulty rhythmic patterns. So these are some of the reasons. So what are the reasons? See, one is Indian English is not unintelligible.
Many languages have migrated into English, link between speech patterns and spellings, and then the difference in creating, Indian languages are all phonetics in nature, wrong accentual pattern, faulty rhythmic patterns. These are some of the reasons. So this question will come, so you can write this. No need of explaining anything, just write this. With examples, the examples will be there. I'll just come to that. Now, for example, this one we saw that this was ch, this was j. Normally what happens is when you are trying to say this ch, j, okay, but we are not giving, it should be spoken more with tip of the blade, but then what we are doing is, and then lip rounding should be there, which we are not doing. So that is a perfect example. Then t and d. Okay, so instead of t and d, we say t d. Again, that creates problem. Then in India, people have the habit of whenever there is any n, people say that g also. Like for example, song. Okay, so that n and g are pronounced together. That is again one of the example. So these three are examples. You can give those examples. Now you see the spelling system established several hundred years ago is still used for a language that continues to change and develop its spoken form. Earlier, when you used to say knock, there was a K-N-O-C-K, no K-N-O-W, ni K-N-E-E. Okay, then like for example, GH, night, then thought, among others. This is completely not needed. These GH in night and thought, K in knock, no and ni, but then it is used. And we are continuously using them. And as to vowels, change in progress when the system was doing change in pronunciation have led to such matched spelling mismatch pronunciation, like BEAT is beat, no doubt, but GREAT is great. FOOD is food, FOOT is foot. You see the difference. Then words alter their pronunciation depending on adjacent sounds and stress pattern. For example, electric. Electric, you see both the C. Elect is k sound, and electric again k sound. It represents the sound K as in kiss. But in electricity, you see CITY, but the sound is like S as in silly. Electricity is not electricity. It's not like that. Compare the pronunciation of I is in senile. Okay, it's senile. But whereas it is SENILITY is senility. Problem sounds so and z. Okay, there are people, you see, there are three kinds of shas that we also had discussed. One is sa, one is that first is shalgam wala sha, then dhanush wala sha, and sapera wala sa. Three sas are there, but then people have the habit of using only one sa. Problem in English. This is like this one. This is the most problem sound. Instead of saying measure, how do you say measure? It is a combination of S and Z. Okay, measure. It's not measure. Some people have the habit of saying measure. Okay, garage. It's not garage. It's garage. Then Z. People have the problem. That is for Zoom. People say Zoom. Okay, Xerox, Xerox. Okay. Then distinction between v and v. You don't say v, you say bh. You don't say v, you say v. Okay, because of our English, because of our alphabets. Okay, most speakers replace bh and v and v by bh. Both. There is only one sound. That is for west and west, it is together. Wine and wine, again it is together. Okay. Then th and the. This is th is for theta and the is this sound. These are the two sounds. Okay. So that also we have problem. Then the next one is p-t-k. People say f-t-k. So these are the summarized version. S and z. Then S is like dogs. D-O-G-S. We say dogs. KS and GS, exact, that is GS. Then you are used to spelling pronunciation, is completely the summary.
Then this L, M, and N, it is completely mother tongue interference. Okay, L, M, and N, people have the habit of saying that. Okay, then you do not make clear distinction between A and A, and then A and A. Then receive pronunciation, long vowels and diphthongs are relatively longer, that we had discussed. Long vowels, which is produced for a longer duration of time, E, U, A, but then we don't do that. Then in general Indian English, long vowels tend to be shortened. Yes, shoes, we say shoes. RP, receive pronunciation, has weak vowels and unaccented syllables. This feature is not consistently observed in Indian English. This VS and WS. Okay. This is a common problem between of many Asians and Europeans, so don't take it personally. There is a clear difference between W and V and B, but people don't do that. Even though most of Indians understand the difference, but distinction is not done in spoken English. Sh and sir. The difference in the sound of su and shu are easy, should be easy to understand, but we don't do that. Sir as in sir and z. Then th and the should not be same. Not a problem of speaking, but again a habit. Then the vowels are very important to pay attention to. If you are having difficulty with vowels, make sure you correct it. Buy a good book on pronunciation, or find some local or online resources. If, for example, long vowels are supposed to take longer to vocalize compared to the shorter ones. But since we are not going to do that in, we are not going to have test of spoken English, we're going to have it in written English. So we don't have to worry about that, but it is for your understanding. Short vowels is rat, leg, pig, rob, bus. Don't park on them. Move on to the next sound. Long vowels, rate, he, side, robe, tongue. Hang in there, don't rush. So here you see some examples. Silent, B is silent. Dumb, you don't say dumb, you say dumb. Climb, comb, limb, thumb. Then again silent B, doubt, you don't say doubt. Debt, we don't say debt. Subtle, we don't say subtle. Okay, silent C, scene, signs, fascinate, muscle, ascent, decent, scissors. Silent G, sign, design, resign, foreign, rain. Silent GH, high, higher, right, might, flight, thigh, sigh. Silent E, evening, interesting, vegetable. Okay, so this is one example. Practice out louder, speak out often as much as possible. Then practice in front of the mirror or without a friend. Make a game out of it. Watch TV to get exposure of local dialects and speech mannerism. Record your audio, listen to it, and then practice to improve the pronunciation. Avoid false or fake accent. We will find many people with fake accent. Please avoid that. Use your natural ways. So this is saying aloud. I don't think we should do this. Okay, so this is all about your phonetics. Now just tell me if you have any doubt. Was it interesting? I hope it was interesting. Should I give you the next important questions? 5 or 6 are there. I think we can do that. Please take, I would request you to continue from that document where you have left. You were writing the mid-semester questions. So I would request you to continue from there. Yes, Davar wants to say something. Ma'am, you were telling about the accent of water, that we have to pronounce it clearly, but in the British accent, they pronounce it water. Water. They are not clear in the accent. Are they wrong somewhere? No. You see, accent, the problem is we are not discussing about which accent is correct, which accent is wrong. It is very common that as
Indian native speakers, we will have different accent. So, but since because of colonization, the Britishers have ruled over many countries in the world, so they wanted to impose their English, and the person who was not using their English, they punished those people. Okay, so they thought that it was right, and we thought that we will try to do that, and even if we are not able to get it, we are wrong. But we are not wrong. It is our way of pronouncing a language which is not our mother tongue, right? So we can pronounce it in our own way. Let them pronounce it in their own way. So we are just discussing about the difficulties that we usually face while speaking a language which is not our mother tongue. Okay. But ma'am, we can speak in British accent too, na? Yeah, we can always. And that might not be wrong because No. as you said that we have to be clear. You see, when you say water, and then I have seen many people who have gone from India, who have gone from other countries to US, they have completely changed their, I mean, their accent has become completely Americanized. So same thing, you can also do that, not a problem. Yes, ma'am. My cousins also moved to America in like 2016, and their accent has also changed. Yeah, same thing will happen. Also, just to add to Yesterday that, I was watching. India still follows British English, so it won't be British. really wrong to actually follow the British accent more than the Indian accent because it will be Exactly. logically right. You see, Anish, I would say that if we are talking about logically and genuinity, I would say that, like, for example, if you are going to US, okay, and you are following the British accent, you might not be even understood by them because they speak a language. For lift, we say lift, they say elevator. And if we think that, okay, since British language is British accent or British English is not wrong, we are pronouncing, you might not be understood. So nowadays, because of globalization, US has an others. That's what I feel. I don't know how far I'm correct, but that's what I feel. So maybe what you can do is, like, if you aim to go abroad, if you aim to go US, then you can learn American English. And if you want to go UK, then you can learn British English. There's no harm in that. Absolutely. Yeah. Any other you would like to discuss? Okay. So now I think we can start. So I'll give you the important questions, and then like, if you have any doubt in the questions, then I'll answer. I mean, we'll discuss the answers after that. Okay. So now you can write down what are the components of a paragraph? What are the components of a paragraph? Explain them in detail. Explain them in detail. Okay. Next question. What are the components of a long report? What are the components of a long report? What are the components of a long report? Explain each of them in detail. Explain each of them in detail. Next. What are the components of a long report? What are the components of a long report?
/ manuscript form of report / manuscript form of report / manuscript form of report. Explain them. Explain them. Then what do you mean by end mark? ENDMARK. End mark. Explain all the 4 types of end mark. Explain all the 4 types of end mark with examples. With examples. Next question. What do you understand by problem sounds? What do you understand by problem sounds? Explain them in details. Explain them in details. Next question. What is mother tongue interference? What is mother tongue interference? Give examples of at least 4 sounds causes interference in mother tongue, which causes interference in mother tongue. Okay. Can you please repeat the last sentence? Give examples of at least 4 sounds which causes interference in mother tongue. Okay. Now come to the short question. Short question. Differentiate between cohesion and coherence. Cohesion and coherence. Then enclosure and complementary closure. Enclosure and complementary closure. Internal and external reports. Internal and external report. Voluntary and authorized report. Voluntary and authorized report. Short and Before long. voluntary and authorized report, could you just repeat? Internal and external report. Then short and long report. Last one is informational and analytical report. Informational and analytical reports. You can study this much, and I think all the questions are given in my notes. All the questions, I think you have also in some dictation you have taken. You can find answers from there,
and so you can study this much, and then I think it would be enough for you. Okay, Wednesday I am starting the Viva. Okay, I'll start the Viva, and I will write. Sorry, I'll ask you. As I said, first question would be completely. All this. I mean, the students from other sections, they are just enjoying it. So you should also don't feel so tensed and worried about it. Just go through the topics which are given in your which were done in your lab class, the theoretical portions. Okay, go through that, and I think you will do well. And first question, as I said, it is very interesting, and it will be very interesting also to answer them also. Don't worry. And then Thursday we will complete your I try to complete your Viva, and Monday I will take the class assignment. That is the second assignment that was left out. We'll do that. Okay, and I'll also discuss the previous year's questions and semesters one in details. Okay, and I'm giving attendance, as I said, I'm giving attendance to all this time, because it's deducting attendance when some of you might be busy for your for preparing your exams and all, and I can understand that your exams has been like many were thinking that your exams will be postponed, but unfortunately it did not. Even we were also thinking, but then it did not. So you should spend your time studying for your exams. Okay, and even Viva also, I would request that those of you whose Vivas are over, you can quit the exam if it is not completely mandatory, right? So I'm ending the class today. Okay, and I'm just giving your attendance to all, and after that, now you ask me if you have any query or anything you want to ask or anything you would like to discuss. Just let me know. Ma'am, regarding the non-verbal one, the assignment, can you please share the sample with us in the Google Classroom, so just we can refer to it while making it? I will do that. I think I have it with me, but I am not having it with me exactly now. I'll share it in the Google Classroom. I'll upload everything. Whatever is being left, I'll upload to, materials and all, everything, I'll upload it. You just remind me tomorrow. If I'm not uploading by tomorrow, please give me a strong reminder, please. Okay, so that I'll do it. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, I had a doubt from Chem question. One question. Please ask me. Then what is the vital aim of professional communication? What will be the answer of that question? The options were, ma'am, receiver's understanding, receiver's relation with the sender, receiver's response, receiver's goodwill. Actually, I think as per that is not checked by us. That is completely automated, checked automatically, and it has been checked by this. It is being checked by the system. I have only checked the second part. Okay, so I don't think now I'll be able to remember that. Okay, but let me. I'll try to find it out. Understanding. It will be I don't know actually. understanding. If it is wrong, then it has been discussed, and I mean, like the experts, they give the answer solution to us, and based on that, it is checked. Okay, so I'll just see it and I'll let you know. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, I just wanted to say that you have already uploaded the sample for the non-verbal assignment in the classroom. I've done it, na? Upload. Yes, Did I? For non-verbal or for okay. Oh, then ma'am, it I was don't. a PDF which had all the it was from a past student. It had all the different colors and logos and everything. Okay. Thank you, Janvi. I think you can just see it, refer to that. Okay. And let me know if you have any doubt, Davar. Yes, ma'am. Let me check. You just check it and then let me know. And anything, Janvi, anything else I have left out? Ma'am, I don't think so. Okay. I will also see it and then I'll let you know. Okay. If I have missed anything, then Yes, I'll ma'am. let Is there? Is there? It's there, na? Yeah. Okay then. So thank you so much. And we end the class here. Okay. Ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. इन वर्ष में टेस्ट का प्रॉब्लम किए हो
Yes, sir. Yes. एक ही लड़का का वॉइस मिला है। गॉस शेडल में हम क्या कर रहे थे, जितना इक्वेशन था उतना ही अननोन था। नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन सेम था। 3x3 मैट्रिक्स हम कर रहे थे, 2x2 मैट्रिक्स कर रहे थे, याद है? यस मैं सर। कुछ पूछ रहा हूँ, रिप्लाई दो। गॉस शेडल मेथड में लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे थे, वहां पर क्या था? नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। Number of unknown variable. तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सपोज देयर आर m equations, linear equation with n unknowns. The system is a11x1 कितना इक्वेशन है? Number, how many equations you have? Sir, m number. M number of equation, n number of unknown. मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होगा बोलो? Sir, A11, A12, A13, A13 A12, up to A1n. A1n, हाँ। ये अनकाउंटेबल रोज और कॉलम्स के लिए हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में है ax इक्वल टू b। स्कूल में तुम्हें बताया गया है। Yes, sir. मैट्रिक्स मेथड में जब सॉल्व कर रहे थे तब ऐसे हुआ था। यहाँ पर मेथड क्या है? मेथड को समझो ठीक से। टेक द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। गॉस जॉर्डन में हम ले रहे थे ऑगुमेंटेशन ऑफ ए एंड आई। यूज zero operation to convert matrix A to upper triangular form. If rank of A equal to rank of augmented matrix
equal to number of unknowns, then this system is said to be consistent and possess unique solution. If rank of A is not equal to rank of augmented matrix, then the system is inconsistent. System is inconsistent. So there will be no solution. If rank of A तीन condition है equal to rank of augmented matrix equal to R, which is less than N. N क्या है? What is N? Number of यहाँ पर unknowns. लिखा है ना, number of unknowns. तुम देख भी नहीं रहे हो. Number of unknowns से less है, then the system is consistent, Infinite solution. but infinite number of solution will exist. Solution will exist and n minus r unknowns. N minus r unknowns are to be arbitrary. आर टू बी आर्बिटरी क्या है वो प्रॉब्लम में करके दिखाऊंगा अभी तीनों केस में एक एक क्वेश्चन. टू एक्स प्लस 6y इक्वल टू -11, 6x प्लस 20y minus 6z equal to -3, 6y minus 18z equal to -1. ऑगुमेंटेशन क्या होगा फटाफट बताओ. Sir, 2, 6, 6, 26, 0 Yes, sir. minus 6 minus 18 minus 11 minus 3 minus 1. तो फर्स्ट स्टेप में रो 1 फिक्स 2, 6, 0 minus 11. रो 2 कैसे रिप्लेस होगा? Sir, row 2 minus 3 of row 1. That is 0, that is 2, that is -6, that is -3 plus 33, 30. यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, कुछ नहीं करना है. ये हो जाएगा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट पाइवट है 2. नेक्स्ट पाइवट 2 है, तो ऑपरेशन कैसे होगा? Sir, row 3 minus 3 row 2. -11, 0, 2 minus 6, 30. रो 3 कैसे रिप्लेस होगा? Row 3 minus 3 row 2. 0, 2, 0, 0, 0. ये कितना हो जाएगा? -91. तो ये मैट्रिक्स का रैंक क्या है? 2. Sir, 2. रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2. रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का क्या है?
पूरा मैट्रिक्स का, ये पूरा मैट्रिक्स का रैंक कितना है? Sir, 3. 3. So rank of A is not equal to rank of augmented matrix. The system is inconsistent. System is inconsistent. There is no solution. There is no solution. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Any doubt? No, sir. Then x1 plus 2x2 plus x3 equal to 2. 3x1 plus x2 minus 2x3 equal to 1. 4x1 minus 3x2 minus x3 equal to 3. 2x1 plus 4x2 plus 2x3 equal to 4. फटाफट बताओ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। Yes, sir. बताओ। Sir, 1, 2. The second equation 1 है क्या? सेकेंड इक्वेशन 1 3. है। नहीं सर, 3x 3 plus 3 1 minus 2 1 minus 2. 4 4 minus minus 3 minus minus 3 1. minus 1 2 4 2 2 4 2 4 1 2 2 1 3 4 3 4 ऑपरेट करो। रो 2 कैसे रिप्लेस होगा? रो 2 माइनस 3 रो 1, क्योंकि ये पाइवट है। yes Yes, sir sir. yes sir 1 2 बताओ कैलकुलेशन फटाफट करके। 0 Sir, 0. minus 5 minus 2 minus 2 minus 3 minus 5 Yes. हो जाएगा 1 minus 5। Sir, minus 5. रो 3 कैसे रिप्लेस होगा? row 3 रो minus 4 minus row 4 3 रो 1 minus Sir, 4 R1. 0 minus 11 then minus 5 minus 5 रो 4 कैसे रिप्लेस होगा? रो 4 row 4 minus minus 2 2 minus 2 over 1 0 0 0 0 क्लियर? yes sir Yes, sir. ये कहा था पाइवट एलिमेंट, यहाँ पर ये पाइवट है। पाइवट को थोड़ा 1 कर दो, रो 2 को रिप्लेस कर दो रो 2 बाई माइनस 5। Yes, sir. नहीं भी कर सकते, yes sir करने से इजी होगा। 0 1 1 1 0 minus 11 minus 5 minus 5 0 0 0 0। अभी बताओ, अभी Sir, पहला दो रो row फिक्स 1 2 1 2 0 1 1 1। रो 3 कैसे रिप्लेस होगा? sir, पाइवट ये है। row 2. Row 2. sir row 3 3 minus plus रो 2 11 plus R1 row yes sir 11 row 11 1. row 2 Row 2. तो क्या होगा? 0 0 6 6। ये तो 0 0 है, नहीं करना है। अभी देखो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म को आ गया। Sir, okay, I got it. अभी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म को आ गया। ये पाइवट लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि उसका नीचे ऑलरेडी 0 है। 0 है। ओके, हाँ हाँ आ गया सर। तो रैंक ऑफ ए क्या है? 3 सर। Sir, 3. रैंक ऑफ ए 3। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड क्या है? 3 Sir, 3. नंबर ऑफ अननोन कितना है? 3
नहीं हाँ x1 x2 x3 तीन है, सब सेम है. Sure. So here rank of A equal to rank of augmented matrix equal to number of unknown. So the system is consistent. This system is consistent and possess यूनिक सोल्यूशन. थ्योरी में वही बात कहा ना, वो Yes, sir. यूनिक सोल्यूशन कैसे मिलेगा. अभी ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो. इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होगा. फर्स्ट इक्वेशन हु कैन से Sir, 2x1 x1 plus plus 2x2 x1 plus plus x3 is 2x2 equals to 2. x1 plus 2x2 plus x3 equal to 1 1 ना 2. The 2. 2 sir. सेकेंड इक्वेशन में एक जीरो है तो x1 नहीं रहेगा. कौन रहेगा. x2 and plus x3. x3 equal to 1. थर्ड इक्वेशन में क्या रहेगा. x1 x2 नहीं रहेगा. x3 6x3. 6x3 अभी बैक ट्रैक करो, पीछे से चलो. x3 का वैल्यू क्या मिला. So 1. 1. x2 का वैल्यू क्या मिला. 0. 0. x1 का वैल्यू क्या मिला. 1. So 1. That is the unique solution. That is the unique solution. Any doubt. No, sir. Third case. 5x plus 3y plus 7z equal to 4. 3x plus 26y plus 2z equal to 9. 7x plus 2y plus 10z equal to 5. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा बताओ फटाफट. Sir, 5 3 7 5 3 7 4 3 3 26 2 9 2 9 9 7 2 10 7 5. 2 10 5. तो पहले पाइवट, ये पाइवट होता है, ये पाइवट को 1 कर देते हैं. R1 को रिप्लेस कर दो R1 by 5. तो 1 3 7 4 by 5 3 26 2 9 7 2 10 5. तो रो 1 फिक्स हो गया. 1 3 by 5. ये डेसिमल में कन्वर्ट मत करना. डेसिमल में कन्वर्ट मत करना, ऐसे फ्रैक्शन में रखो. रो 2 कैसे रिप्लेस होगा बताओ फटाफट. Sir, row 2 minus 3 minus 3 row 1. Row 2 minus 3 R1. -3 रो 1 क्या होगा. 0 0 26 minus 3 by 5 26 minus 9 by 5 180. Sir, 26 121 by minus 5 121 by 5. देन करो कैलकुलेशन करो. 2 minus 21 minus 11 by 5. Minus 11 by 5. Yes sir. देन ये होगा 9 minus 12 ना 45 33 by 5. रो 3 कैसे रिप्लेस होगा. So row 3 minus 7 R1. 7 R1. It is 0. ये क्या होगा. 2 minus 21 by 5 है. 2 minus 11 by 5. Then
10 minus 49 by 5, 10 1 minus by 5 आ जाएगा. 1 by 5, then 5 minus 28 by 5 minus 3 by 5. नेक्स्ट पाइवट क्या है? नेक्स्ट So पाइवट 121 by 5. 121 by 5. रो 2 को रिप्लेस कर दो, रो 2 बाय 121 by 5, 0, 3 by 5, 7 by 5, 4 by 5, ये हो गया 1, minus 11 by 121, minus 11 by 121 is minus 1 by 11, then 5 by 33, 5 by 121, 11 11 33, 3 by 11. और उसको भी चेंज कर सकते हो, रो 3 को फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, 5 रो 3, तो 0 minus 11 1 minus 3, ये अभी हो गया पाइवट. ये पाइवट हो गया. तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 3 by 5, 7 by 5, 4 by 5, सेकेंड रो रहा 0 1, 0 1 minus 1 by 11, 3 by 11, 3 by 11. रो 3 कैसे रिप्लेस होगा? Sir R3 plus 11 R2. 11 not. R3 plus 11 R2. थोड़ा कैलकुलेशन बेटा कर लो, जल्दी जल्दी थोड़ा Yes, sir. कैलकुलेशन कर लो. R3 प्लस ये भी 0 हो जाएगा. Yes, sir. 11 minus 3 Yes, ये भी sir. 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा. रैंक ऑफ ए क्या है? Sir, 2. 2. That is equal to rank of this, which is less than number of unknowns, which is less than number of unknowns. So this system is consistent, but possess how many solution? Sir, infinite. Infinite number of solution. वहां पर लिखा था, देखो, r लेस देन n होने से इनफाइनाइट सोल्यूशन, n माइनस r अननोन्स क्या होगा लिखा था? आर्बिटरी. उसका मतलब क्या है? तो हियर n is 3, r is 2, one unknown is to be arbitrary. One unknown is to be arbitrary. एक अननोन आर्बिटरी होगा. बैक ट्रैक कर लो. x प्लस 3y by 5 plus 7z by 5 equal to 4 by 5, or you can say second equation है y minus 1 by 11z equal to 3 by 11. इक्वेशन को और थोड़ा लिख सकता हूँ, 5x plus 3y plus 7z equal to 5. ये 11y minus z equal to 3. Am I right? Or equals to 4. पहले क्वेश्चन पे 4 है ना सर ऊपर? ऊपर वाला 4 है. तो एक अननोन आर्बिटरी होगा. एक अननोन आर्बिटरी होगा जिस इक्वेशन में लेस वेरिएबल है, जिस इक्वेशन में लेस वेरिएबल है, उसी इक्वेशन से जिस इक्वेशन में लेस नंबर ऑफ वेरिएबल है, उसी इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल को के ले जाओ.
तो लेट y इक्वल टू k, तो z क्या होगा? सर 11k minus 3. 11k minus 3. अभी सब्स्टिट्यूट करो yz को, सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट इक्वेशन में, बोलो x क्या होगा? सर 4 minus So 4 minus 3y minus 7z by 5, and then we'll substitute. हाँ y के सब्स्टिट्यूट करो ना, सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा बताओ ना. 1/5 4 minus 3y minus 7z, so that is 1/5 4 minus 3k minus 7k plus 21, that is 1/5 25 minus 80k, 80k. or that is 5 minus 16k. Yes, Those sir. are the values. K is arbitrary. K is arbitrary. K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. K 0 होने से एक सेट ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, K 1 होने से अनदर सेट, K 2 होने से अनदर सेट, ऐसे इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशन मिलेगा. ऐसे इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशन मिलेगा. सर हम y को k लिए, आप तब कुछ बोले थे ना, किसी ये y को क्यों Z k को भी लिए K है ले थोड़ा? सकते हो, Z को भी K तब ऐसा लेने नहीं से करता अनदर ना. सेट ऑफ सोल्यूशन मिलेगा. जिस इक्वेशन में लेस वेरिएबल है उसी इक्वेशन से किसी एक को, यहाँ पर एक अननोन आर्बिट्ररी, तो एक अननोन वहां पर लेस वेरिएबल है. ये इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को मैं आर्बिट्ररी ले जाऊं तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मुझे मिल जाएगा. कोई इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी है तो वहां पर कितना वेरिएबल रहेगा ना, 3 वेरिएबल रहेगा लेस वेरिएबल इक्वेशन में. न लिखने के लिए अभी टाइम नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले जाओ. सर नेक्स्ट. Next. एक बार पीछे करिएगा. थैंक यू सर. नेक्स्ट पेज. ये पेज हो गया सर. नेक्स्ट पेज.
Sir, next. Sir, next. हो गया? हाँ सर. हो गया तो एग्जिट करो, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम करके देखो। सर आप ये बंद करने के आगे इसके आगे वाला पेज एक बार सर एक्सप्लेन कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन. क्या है? सर इसमें जो आप यूटीएफ में ट्रांसफॉर्म किया ना, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना. यहाँ पर पाइवट एलिमेंट 5 है, 5 को 1 किया क्योंकि नेक्स्ट कैलकुलेशन मुझे इजी होगा। ठीक है सर. यहाँ पर पाइवट एलिमेंट 121/5 है, उसको 1 किया। इतना तो किया है, और क्या है? और तो बाकी तो यूजुअल प्रोसेस है। पाइवट एलिमेंट जो है, पाइवट एलिमेंट को हमेशा 1 कर दो, बाकी तुम्हारा कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है सर.